तो आपण मैंने देखुए यहाँ हूँ नवम श्रेणी इंग्लीश जुम्बो लिखाई ऊपर टीवी डब्ल्यू जमी मुझे आपको कही जे टीवी डब्ल्यू अधिक भ्यू आसे अधिक पिला देखती विश्वास करती ना कि कौन से टीचर को विश्वास करते तो मुझे आपको कहवा अनुसार टीवी डब्ल्यू मुझे सेयार कर व्हाट इज दिस पोएम अबाउट यही कविताटी क्यों विषय कही तो उत्तर लिखा द पोएम इज अबाउट द सिमिलारिटी और इक्वालिटी एमंग ह्यूमन बीइंग मनीष मानकर मनीष समाज भितर जो एकता को बजाय रखापी समानता को बजाय रखापी से विषय कहुला पिला माने तापर जीवा 2 नंबर को 2 नंबर कौन अच्छी व्हाट शुड वी रिमेम्बर आम मान को कौन मन रखार अच्छी तो उत्तर लिखा वी शुड रिमेम्बर दैट आमको मन रखार अच्छी जे बियॉन्ड आवर आउटर एपियरेंसेस देयर इज वन सेम बॉडी बाहर कौन ना आमर परी समान बॉडी अच्छी आउ सोल तांकर भी आमर परी आत्मा अच्छी जे रिसाइड इन अज आल एंड दैट नो मैन और कंट्री इज फॉरेनर से जानवर अच्छे जेहेतु तांकर भी आमर परी शरीर आ आत्मा अच्छी से किए भी विदेशी नुहंती एमती लिखाई पिले 3टा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रो अर्थ तुम्हें कौन भावुच एज मेंशन बाय द पोएट जेमिति कि एठारे पोएट आमर मेंशन करिछि तो उत्तर लिखिबे आंसर हियर इन दिस पोएम यूनिफॉर्म मीन्स द आउटर अपीयरेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड किंबा और कंटिनेंट भिन्न भिन्न देशर लोक माने जो भिन्न भिन्न पोशाक पिंधुछंती ताकू यूनिफॉर्म कहा जाउछि हला सेमती तो 4 नंबर कौन अच्छी व्हाई आर द यूनिफॉर्म्स डिफरेंट कहीं यूनिफॉर्म गुड़ाक अलग अलग रोचे उत्तर लिखा द यूनिफॉर्म्स आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस डिफरेंट जोग्राफिक डिफरेंट जियोग्राफी रिजियन एंड क्लाइमेट कंडीशन विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न देशर आमर जियोग्राफी माने भूमि एवं क्लाइमेट पाणीपागर अनुसार है अलग अलग रोचे तापरे व्हाट इज देयर बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म व्हाट इज देयर बीनीथ समस्त यूनिफॉर्म तले कौन अच्छी तो उत्तर लिखा जहाँ मुझे ऊपर को उठे दूसरी उत्तर लिखा कौन ए सिंगल बॉडी इज देयर बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म सब यूनिफॉर्म तले बा सब यूनिफॉर्म भितर आमर बॉडी गोटे सिंगल बॉडी अच्छी समस्त देह गोटे गोटे अच्छी किंतु यूनिफॉर्म अलग अच्छी है तापर 6टा कौन अच्छी डू ऑल द पीपुल ऑन द अर्थ ब्रेथ्स द सेम वे कौन सबू लोक माने ये पृथ्वीर समान धरणर ब्रेथ माने निश्वास नौचंती कि आंसर लिखाई यस हाँ ऑल पीपुल ऑन अर्थ ब्रेथ द सेम वे समस्त लोक ये पृथ्वीर समान हिसाब रे बा समान वे रे समान तरीका रे निश्वास नौचंती 7 नंबर कौन लिखाई पिले हु डज आवर ब्रेथ्स स्टैंड फॉर ब्रदर्स हु डज आवर ब्रदर्स स्टैंड फॉर आमर भाई माने आवर ब्रदर्स है बा आमर भाई माने कौन पाई स्टैंड अच्छी आवर ब्रदर्स स्टैंड फॉर आवर फेलो ह्यूमन्स से 8 नंबर को जीवा कौन अच्छी हाउ डू दे वॉक डू वी वॉक लाइक देम केमती से माने चलती डू वी वॉक कौन आमे भी तांकर ऊपर चलुचु कि तो उत्तर लिखिबा यस दे वॉक ऑन द अर्थ यस वी वॉक लाइक देम तो कौन अच्छी से माने भी पृथ्वी चलती हाँ आमे भी तांको परी चालू तापरे नेक्स्ट जीवा परवर्ती 9 नंबर कौन अच्छी व्हाट डज द फ्रेजेस इन व्हिच स्टैंड फॉर इन व्हिच जो फ्रेज अच्छी कौन पे ठियाई कौन पे लिखा अच्छी 4th लाइन फास्ट स्टांजा बही थिबार उत्तर लिखा कौन द फ्रेज इन व्हिच स्टैंड फॉर द अर्थ कौन पे अच्छी पृथ्वी पे अच्छी ये अर्थ पे है तापर 10 नंबर वेयर आर पीपुल बुरीड व्हेन दे डाई केउठारे लोक मानकु पोता जाए जेतेबेले से माने मरंती मर जाती ना इज इट कॉमन एवरीवेयर कौन एडा समस्त समान कि उत्तर लिखिए पीपुल्स आर बुरीड इन ग्राउंड एर्थ है माटी रे पोता होती व्हेन दे डाई जेतेबेले से माने मर जाती
यस इट इज कॉमन एवरीवेयर हाँ एटा समस्त साधारण मा कॉमन से समस्त को समान नहीं इन द सेंस दैट ऑल बॉडीज टर्न इनटू डस्ट है समस्त देह माटी मिशीज बी इट बाय बोरिंग बर्निंग और बाय कौन पिले बर्निंग और बाय बोरिंग है याकू जालू कि पुतु जहाँ कर माटी मिशिब 11 ऑल पीपुल इन द वर्ल्ड आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर समस्त लोक माने पृथ्वीर आमर भाई एवं भौणी हाउ शुड वी ट्रीट देम किभली एहाकू आमे ट्रीट करिया किभली आकू आमे नबा देहकू तो उत्तर लिखिबा वी शुड ट्रीट देम इक्वाली आमे समस्त को ट्रीट करिबा बा समस्त को समान परिमाणर कौन ट्रीट करि परिबा हला 12 हु डज दे रिफर देडा कौन पैडी रिफर अछि रिफर कराइछि टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन सेकंड स्टैंजा रो फर्स्ट लाइन डारे आंसर लिखिबा दे इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंजा रिफर टू आवर फेलो ह्यूमंस और द अदर ह्यूमंस ऑन अर्थ तापर 13टा कौन लिखा अछि 13टा अछि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सन आम सूर्य कौन पाऊ डू पीपल इन अदर कंट्री गेट इट कौन अन्य देशर लोक मैंने भी यह पाती कि उत्तर लिखा हम वी गेट ब्राइट लाइट एंड वार्मथ फ्रॉम सन आम उज्जवल आलु एवं गरम पाऊ सूर्य ठारू यस हाँ पीपल इन अदर कंट्रीज गेट इट टू अन्य देशर लोक मैंने भी यह पाती 14 नंबर हाउ इज एयर एसेंशियल टू अस क्यों भली पवन आमको बहुत दरकार इज इट एसेंशियल फॉर द पीपुल इन अदर कंट्री कौन एडा अन्य देशर लोक मानक भी दरकार कि आंसर एयर इज एसेंशियल फॉर आज टू ब्रेथ इन एयर आम कौन निश्वास ना दरकार हाँ यस इट इज इक्वाली एसेंशियल फॉर द पीपुल इन आवर अदर कंट्री एटा समान परिमाण रे अन्य देशर लोक मानक भी दरकार जो भाई आमको दरकार पड़ुଛି 15 लिखा अछि कौन कैन वी लिव विदाउट वाटर कौन आम पानी व्यतीत बंची पारिबा कि व्हाट अबाउट द पीपुल इन अदर कंट्री कौन याकू नहीं कि अन्य देशर लोक मानकर विषय कौन धारणा अछि तो उत्तर लिखिबे नो वी कांट लिव विदाउट वाटर नहीं आम पानी बिना बंची पारिबु नहीं नो द पीपुल इन अदर कंट्री कांट लिव विदाउट वाटर एदर अन्य देशर लोक माने भी पानी बिना बंची पारिबे नाही तापर पिला माने 16 नंबर टाको देखिया 16 नंबर कोन देछि व्हाट आर द पीपुल इन अदर कंट्री अवेयर ऑफ डू ही आल्सो रियलाइज इट इन द सेम वे व्हाट आर द पीपुल इन अदर कंट्री अवेयर ऑफ कोन पे अन्य देशर लोक माने सतर्क होबार अछि हला उत्तर लिखिबे द पीपुल इन अदर कंट्रीज आर अवेयर ऑफ द सन सूर्य विषय रे एयर एंड वाटर सूर्य पवन आ पानी विषय सतर्क होबार अछि यस हाँ वी आल्सो रियलाइज इट द सेम वे आमे भी समान धरणर अनुतप्त करिवार अछि या विषय रे रियलाइज करिवार अछि त 17टा कोन अछि हु आर बेनिफिट इफ देयर आर पीसफुल हार्वेस्ट हाउ जदि एडी शांति हार्वेस्ट रहिबो किए बेनिफिट पाई परिबे हला किए तार लाभ पाई परिबे उत्तर लिखे पीपुल आर बेनिफिटेड इफ देयर आर पीसफुल हार्वेस्ट लोक माने उपकृत हो परिबे एज इट इंडिकेट्स दैट द वार्स लॉन्ग गोन एंड गोन आर द स्टार्वेड विंटर 18टा कोन अछि कैन देयर बी पीसफुल हार्वेस्ट्स इफ देयर इज ए वार कौन जदि युद्ध हम ताहले शांति भाव में हार्वेस्ट हो पार कि व्हाट हैपेंस टू पीपुल व्हेन देयर इज ए वार और आफ्टर ए वार कौन हम लोक मानकर जदि सेठारे युद्ध हम कि युद्ध पर कौन हम उत्तर लिखिए नो देयर कैन नॉट बी पीसफुल हार्वेस्ट इफ देयर इज ए वार व्हेन देयर इज ए वार पीपुल लिव अंडर द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ हला थ्रेट ऑफ डेथ माने मरणर भय थ्रेट भय
valuable life and property are lost. valuable life ମାନେ ଦାମୀ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇ ବସିବେ। flood become scarce and there is scarcity everywhere ହେଲା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 19ଟା ଅଛି what does their hands are our means their hands are ours। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ their hands are our means ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି their hands are no different than our and they labor as hard as we do। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ବି କରୁ। ତାପରେ 20ଟା କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? who do the word they and ours refer to in the first line of the third stanza। उत्तर लिखिए they in the first line of the third stanza refer to our fellow human being or the people of other country and our refer to as the people of our country ହେଲା। ये भितर अच्छी लिखिला नॉर्म नहीं सेटा हाउ कैन वी विन अदर पीपल किभली आमे अन्य लोकन को आमे जीति परिबा होला। तो उत्तर रे लिखिबे कोन वी कैन विन अदर पीपल बाय लव प्रेम द्वारा आमे अन्य को जिणी परिबा। 22 व्हाट डज कॉमन लाइफ मीन्स कॉमन लाइफ रो अर्थ कोन? जन्म मरण खुशी है जयफुलनेस माने खुशी पीरियड बार्थ माने जन्म डेथ माने मरण इट्स इत्यादि एंड मोर। आंसर लिखिबे कॉमन लाइफ मीन्स द सिमिलर प्रोसेस ऑफ लाइफ फ्रॉम बार्थ टू डेथ। कॉमन लाइफ रो अर्थ होची समान प्रोसीजर जीवनडू मरण पर्यंत इंक्लूडेड हार्ड वर्क जयफुलनेस कंपैशन लव इत्यादि। 23 Who tells us to hate our brothers किए कहले हमको आम भाई मानू घृणा करिया पे? आंसर पावर हंग्री लीडर्स विथ सेल्फिश इंटरेस्ट्स टेल us to hate our brothers। पावर हंग्री लीडर्स पावर रो जे सत्तार भोकिलार नेता माने से माने कहते जे सेल्फिश हवा पे बोली। 24 What does to hate our brothers mean? आमर भाई मान को घृणा करिवार अर्थ कौन? टू हेट आवर ब्रदर्स मीन्स टू डिस्पोसेस कंडेम एंड बिट्राई आवर सेल्फ्स होला। तापरे 25 हाउ डू वी डिस्पोसेस आवर ब्रदर्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उत्तर लिखिबे वी डिस्पोसेस आवर ब्रदर्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय टेकिंग आर्म्स एग्नेस्ट देम हैला। अन्य देश रे थिबा हमर भाई मानन को केमति हम झगड़ा करिया माने टेकिंग आर्म माने कोन पिले माने हथियार उठेकी हम ता सहित शत्रु हे जाउछु नै। तापरे आउ टिके ऊपर को उठेले 26 नंबर अछि। तापरे अन्य गुडा कवि अछि देखंतु व्हाट इज ह्यूमन अर्थ मनुष्यर पृथ्वी कोन? उत्तर ह्यूमन अर्थ इज आवर अर्थ दैट बिलोंग टू ऑल ऑफ आवर as equally। 28 how do we defile the human earth? उत्तर लिखिबे we defile the human earth by indulging in war and causing harm to our brother and the nature। 28 to whom do we harm by going to war? आंसर लिखिबे by going to war we harm ourselves and our earth that we live on। 29 number what does our hells of fire means? उत्तर रहेबो our hells of fire means the harm we cause or the pollutant we dispose of into the fresh and pure nature। What do we mean by innocence of air? उत्तर innocence of air means the freshness and purity of air। तापरे बेडा देखिबे उत्तर भी देछि चूज द राइट ऑप्शन जेमति देछि एकड़ा ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स बीनीथ ऑल
सी रे अछि यूनिफॉर्मिटी उत्तर भी लिखाई जाइछि पिले से भली व्हाट आर द पीपल अवेयर ऑफ उत्तर डीडा हो ऑल ऑफ द एबव माने समस्त एकटा बीडा तीनटा हैला समस्त मिसिकी तीन व्हाट आर वी डूइंग टू द ह्यूमन अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट डेफिलिंग हैला उत्तर रे अछि बीडा डेफिलिंग हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वन कि भली आमे शक्ति की जीति परिबा बी रो उत्तर देछि बी कोन अछि बाय लव एंड काइंडनेस प्रेम आउ दया द्वारा तापरे परवर्ती प्रश्नटी देखंतु पिले वी शुड रिमेंबर दैट हम कोन रिमेंबर रखियार अछि आंसर दिछि ऑल ऑफ द एबव ऑल माने कोन कोन समस्त नो मेन आर फॉरेन के भी विदेश नुहति नो मेन आर स्ट्रेंज हैला के भी स्ट्रेंज नुहति नो मेन आर आवर एनिमी के आम शत्रु नुहति हैला एमती सब गुडाक तापर जीवा पिले माने परवर्ती प्रश्न दिछि एप्रिशिएट द पोएम व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन एथिरे कवि कोन मैसेज देछि तो उत्तर रे लिखिबे आंसर इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन द पोएम कन्वे दैट all men are equal despite of their different geography region तापरे appearance and habits we all live on the same earth and by hating each other we only destroy our own habitat दुईटा कोन देछि पिले how do we defile the human earth apart from war what other things do we do to defile the earth उत्तर लिखिबे we defile the human earth by cutting down tree building large city and industrial area हला आमे एमिति आमे डिफाइल करछु डिफाइल माने कोन जानछु नष्ट केमति अर्थ कटिंग डाउन ट्री गछ काटिकी बा जंगल काटिकी बड़ बड़ बिल्डिंग तैयार करकी कंपनी ठिया करकी पोल्यूटिंग वाटर जल दूषित करकी रिसोर्स एंड डेवलपिंग वेपन फॉर वार और विभिन्न प्रकार क्षेपणास्त्र तैयार करके युद्ध पाई बोली तापरे तीनटा कोन टिके ऊपर को उठे दूची तीनटा अछि द पोएट यूजेस द वर्ड रिमेंबर 4 टाइम्स रिमेंबर को 4 थर कवि एठारे यूज करछि व्यवहार करछि इन दिस पोएम व्हाट डज द वांट टू कन्वे उत्तर लिखिबे बाय यूजिंग द वर्ड रिमेंबर रिपीटली द पोएट वांटेड यूज टू अंडरस्टैंड दैट all men are equal and we all know how the earth goes the poet is also trying to emphasize that it is we who take arms against each other grow hatred against each other and in doing so harm our own earth and ourselves. Chari. The poet repeats the line, remember no men are strange, no country foreign, in the last line with some changes. What were those small changes? Do both the lines mean the same? ताले उत्तर रे कोन लिखिबे आंसर both the lines are slightly different as in the first line the poet says remember no men are strange no countries foreign and in the last line he says remember no men are foreign and no countries strange however the overall meanings idea of the lines does not change with these changes 5 number कोन अछि पिले how does the poet suggest that all people in the world are equal काहे के हा सजेस्ट करछि तो उत्तर लिखिए all the people in the world have same body hand leg eye ear ears इत्यादि समस्तंगर हाथ गोड़ कान मुंड सब अछि ना all of us need sun air water and survive we work equally hard for our foods हेला पिला माने समस्त सूर्य पवन पानी समस्त ऊपर निर्भर करचंती
वी आर ऑल अफेक्टेड बाय वार आम समस्ते युद्ध द्वारा प्रभावित होउछु एंड वी कैन ऑल बी वन बाय लव एवं आम समस्ते प्रेम द्वारा जन को जीति पारुछु दस द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड आर इक्वल से कवि कही जे सबू लोक माने पृथ्वीर समान तापर जिबा 6 नंबर प्रश्न टी कोन देछि 6 नंबर प्रश्न अछि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड सोक्रेटिस रोट द फॉलोइंग सेंटेंस पृथ्वीर बहुत बड़ दार्शनिक सोक्रेटिस कोन लिखिछि आई एम ए सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस ऑफ ग्रीस मु जने नागरिक ग्रीस रो एथेंस रो नुह बट ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी रो नागरिक हला डज दिस सेंटेंस मैच विथ द देम्स ऑफ द पोएम हाउ उत्तर रे कोन लिखबे यस द सेंटेंस मैचेस विथ द देम ऑफ द पोएम in this sentence the writer is trying to convey the idea that he is similar to all other human beings of the world and that he does not belong to any particular place. The world is his home. Similarly, the themes of the poem we read is also that all men are equal and the world is our home. तापर let's do the activity को जीवा लेट्स डू द एक्टिविटी अच्छी एगुड़ा कौन रिसाइड करार पढ़े निजे पढ़े है आप स्कूल टीचर कि ट्यूशन टीचर सहित मिसिक सब करेंगे कौन कौन अच्छी द टीचर डिवाइड द क्लास इंटू 5 ग्रुप 5टा ग्रुप रे डिवाइड करेंगे सी कि ही माने एटा सी हम आई माने से पुओ हो कि झी हो पढ़े पार्टी करी पद्यटी को 2 टाइम्स 2 थर विथ प्रॉपर अंडर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन माने ठीक सहित है तापर एटा मु कहूनी पुणी तल को जाऊँगी तलटा कौन अच्छी लेट्स से द फॉलोइंग डायलॉग गुड़ाक तापर अच्छी या स्क्रॉल अप कर दूची है पिला तापर 3टा अच्छी लेट्स मैच द स्टांचा देयर विथ देयर नेम थीम्स ऑफ द स्टांचा अच्छी जमती आपण देइछि आर तले उत्तर देइछि एक नंबरटा कौन अच्छी पिले ये जॉइंट कराई कहा सहित जॉइन कराई ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल डिफरेंट यूनिफॉर्म विभिन्न प्रकार अलग अलग प्रकार लोक अलग अलग प्रकार यूनिफॉर्म वॉक इन द सेम वे समस्ते समान रास्तार चलती ऑन द अर्थ माटी उपरे लाई इन द अर्थ व्हेन डाई जेतेबेले मरी जाती से भूमि उपरे पड़ जाती पुणी तापर एमती 2टा ऊपर को अच्छी एमती सब तले लिखाई पिले एगुड़ाक आपने पढ़ी देखिए तापर जीवा नेक्स्ट बर्तमान आम जीवा शेष प्रश्न उत्तर दवा जहाँकि लेट्स राइट नाम नामित अच्छी चलतु पढ़ा पिले राइट पैराग्राफ फॉर ईच स्टांजा ऑफ द पोएम प्रत्येक स्टांजार गोटे गोटे पैराग्राफ लिखापी कही पद्य है गो थ्रो द एबव मैचिंग एक्टिविटी जो ऊपर मैचिंग एक्टिविटी अच्छी से अनुसार आपन लिखिए बिफोर यू बिगिनिंग टू राइट वन पैराग्राफ इज रिटन टू हेल्प यू गोटे पैराग्राफ आपण मानकर साहाय्य पई लिखा जाइछि देखंतु केमति लिखा जाइछि द पोएम नो मैन आर फॉरेन हैज 5 स्टांजास द फर्स्ट स्टांजा इज अबाउट हाउ पीपल इन डिफरेंट कंट्री वेयर डिफरेंट यूनिफॉर्म They walk on the same earth using their legs. We also walk to using our legs. They are buried in the earth when they die. We are also buried in the earth when we die. So we are equal. हेला पिला माने पुणी केमती लिखिबे देखि पारथु एडी सेकंड स्टांजा द सेकंड स्टांजा टेल्स अस दैट द पीपल ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो aware of the sun, air and water. They also harvest their food peacefully in the absence of war. They use their hands to labor as we do. They also suffer from war as we do. तापर पिले तृतीय स्टांजा टी देखा मुझे स्क्रॉल अप कर दूची देख तृतीय स्टांजा कौन अच्छी
The third stanza is about we all having same eyes and living habits. We all sleep and wake and eat to survive. We all are born in a similar way. We live on a similar life till we die. The poet also says that we all know the way of life and we can be won by love. ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ stanza. The fourth stanza condemns those who teach us to hate our brothers living in a different part of the world. Those who teach us to take arms against each other serve their own selfish purpose. The poet here tells us that by doing so, we are only hating, betraying, disposing and condemning ourselves. In the fifth and last stanza, the poet is telling us how we pollute our own home, our earth. Our foolish desire for power, acquisition, and useless competition defiles the pure and fresh air on earth. This is the same air that resides everywhere on earth. He concludes the poem by emphasizing on the words that we are all equal and all lands are similar. ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ए भिडियोटी को अधिक मात्रा रे शेयर करिवो आउ कोन पे भलो लागिला भिडियोटी तळे निश्चय भाव रे लिखि मते जणाइबो ताले रहूची पिले भिडियोटी संपूर्ण रूप देखिथियो आपण माननकु बहुत 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 दिल से धन्यवाद।